Prime Minister Narendra Modi on Tuesday flagged off Maruti Suzuki's first electric vehicle, e-Vitara, from the Hansalpur manufacturing facility in Gujarat. The made in India Maruti e-Vitara will be exported to more than 100 countries, including Japan. Modi also inaugurated the lithium ion battery manufacturing facility by Suzuki, Toshiba, and Denso, supporting hybrid and electric vehicle battery production. PM Modi said that Swadeshi should be everyone's life mantra, adding that the focus in the coming years will be on futuristic industries, including the semiconductor sector. एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत टेक ऑफ कर रहा है। देश में इसके 6 प्लांट्स तैयार होने वाले हैं। हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और आगे लेकर जाना है। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। Modi asked people to buy only Swadeshi products, adding it is not important who makes the investment, but what matters is that the hard work for making the product should be of Indians. यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। On the other hand, Japanese automaker Suzuki Motor Corporation will invest rupees 70,000 crore in the next 5 to 6 years in India to strengthen its operations in the country. It's only raw material and some semiconductor parts coming from Japan. This is a big salute to Atmania Bahar Bharat. We will use a multi-powertrain strategy, including electric, strong hybrid, ethanol flex fuel, and compressed biogas to achieve carbon neutrality and climate change goals. Suzuki will invest over 70,000 crore rupees in India over the next 5 to 6 years. Honorable Prime Minister, Suzuki has proudly partnered in India's mobility journey for over 4 decades. We remain committed to supporting India's vision for sustainable green mobility and contribute to Viksit Bharat. Suzuki said the Gujarat facility, serving customers across India and global markets, will shortly become one of the world's largest automobile manufacturing hubs with a planned capacity of 10 lakh units. This Gujarat facility, serving customers across India and global markets, will shortly become one of the world's largest automobile manufacturing hubs with a planned capacity of 1 million units
Further, we chose this facility to manufacture the e-Vitara, our first BEV, and made it as global production hub for this model. We will export this made in India BEV to over 100 countries, including Japan and Europe. Our second major milestone is the start of production of India's first lithium-ion battery and cell with electrode level localization, which are used in our hybrid vehicles. These are being manufactured at the Toshiba, Denso, Suzuki Gigafactory here.